Hello everyone, welcome back. And now we'll be talking about one more spatial economic theory, and it was given by Haggerstarnd. This is diffusion model, diffusion of innovation, one of the most important models which you can use in different type of answers. ठीक है, अभी इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आई एक्सप्लेन कि कैसे आप दूसरी चीज़ों में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑल्सो. ओके, एंड हैगरस्टैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स about whom you will be studying. So everyone, welcome back, a very good morning again. So settle down everyone, so that we can start with the thing and we cover it, so that you can use the thing in other chapters as well. Like I said कि दूसरे chapters में भी ये use हो सकता है. So हैगरस्टैंड के बारे में फिर से मैं आपको बताऊं, दिस इज वन पर्सन जिनके बारे में हम टाइम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं. ओके, टाइम ज्योग्राफी, एंड दैट विल बी कवरिंग इन पर्सपेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी. सो हिज रेफरेंस विल अगेन बी देयर. ओके, पर्सपेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी जो चैप्टर है वो जब हम पढ़ेंगे तो फिर से हम इनके बारे में पढ़ने वाले. सो दे आर इंपॉर्टेंट पीपल हुज नेम्स will keep appearing again and again, but the good thing is, like, when you'll revise this thing at that stage, it will become very simple for you. You'll understand everything without any difficulty. Okay, but Prabjot beta, a very good morning. तो अभी हमारा पर्सपेक्टिव है, प्लानिंग पर्सपेक्टिव चल रहा है. तो विल सी कि हाउ द थ्योरी वाज यूजफुल फॉर द प्लानिंग पर्सपेक्टिव. ओके, बिकॉज दिस इज सम बेसिक आइडिया. यू कैन नॉट से कि दिस theory again is for regional planning, but it is important for the developmental perspective. तो हम उन theories को देख रहे हैं जिसका developmental perspective है. Okay, which has actually helped in the growth of the planning process. Okay, which people use. So we'll be talking about this perspective. So Haggerstrand, he was a Swedish geographer. Okay, he was born in Sweden, a Swedish geographer who had contributed a lot. In fact, his contribution is to an extent that a new branch, time geography, emerged in human geography. ठीक है, तो he is a very important person, so we'll definitely be dealing with him in more detail. हाँ सुमन बेटा, वेरी गुड, लिख लिया आपने इतनी देर में, बहुत ही अच्छा है. Okay, so he focused on some set of rules that govern the diffusion process. Diffusion is what? Some information reaching new areas. Okay, so he studied the Asby district in central Sweden. Okay, he studied the Asby district of central Sweden, and he came up with certain perspective how development takes place. Okay, the area of his study was this. And based on this study, he came with certain generalization about the how some of the new things reach new people and how they are adapted and how development of that activity takes place. अब इसमें आपको ध्यान देना है कि it is not talking about the development of certain region as a whole because of lot of things. It focuses on simple thing, some innovation. Okay, his focus is a innovation which reaches people and then development take place. ठीक है, तो this development is related to single innovation. Okay, for example, somebody made a wheel and people over a period of time everybody started using a wheel, तो बुलॉक की जगह बुलॉक कार्ट हो गया. Okay, so that kind of thing is some certain innovation which can lead to development. He talked on that perspective. Okay, and when he studied the Asby district of central Sweden, basically he studied the farmers, the process, how they adapt to certain new things in farming, or based on that he came up with this thing. Okay, तो अब आपको ये समझना है कि he simply was about certain specific
innovation which stimulates diffusion of that information amongst the people. तो वो कैसे कैसे होता है. Okay, so we'll read this thing in a little more detail so that we'll not have to repeat at least this aspect in perspectives of geography. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि while giving this thing he had certain assumptions. Okay, he took certain assumptions. जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, वैल्यू को x y z मान लेते हैं कि लेट अस से दैट 100% इज x, 50% is y, that kind of thing. So based on this thing, and this assumption was what he observed. ठीक है, because most of the information in the Asby district of central Sweden was moving amongst the people. When they met each other, they discussed each other. So the very first assumption he made that every information that passes from one area to another area, it happens through face to face contact of the people. जब दो लोग मिलते हैं आपस में बात करते हैं कि मैंने ऐसा किया, okay, I did something like this and I have got certain results, then the person who heard this thing, he'll try it himself and he may tell somebody else कि he did that thing. So in this manner this thing passes from one person to another person. So initially it is a slow process, later it peaks, बहुत सारे लोग अडॉप्ट करने लगते हैं, then it saturates कि कोई नई इनोवेशन आ जाती है, लोग वो करने लगते हैं, इसको छोड़ देते हैं. This is the process that we'll be discussing here. Okay, so write down first assumption. Assumption 1. Okay, the information amongst the farmers is spread by face to face contact. The information amongst the farmers spreads by face to face contact. Information amongst the farmers spreads by face to face contact. Okay, and the probability of the contact depends upon the distance. Okay, so if some innovation is there, मान लीजिए किसी ने पहले पॉन्ड से पानी निकालते थे, किसी ने कुआं खोद लिया. Okay, so he can tell this information कि well से भी पानी निकाल सकते हैं to the nearby people who can see, who can share the information. But somebody who is residing 10-15 kilometers away, he may not know this thing for a very long period of time. So distance is a important factor. He considered distance as an important factor in dissemination of the information. How many people will get the information depends upon the distance. Okay, and the second assumption he took is as soon as somebody learns about it, he adopts it. किसी भी आदमी को पता चला कि ये किया, इससे फायदा हो गया, तो वो वापस जाते ही उसको ट्राई करने लगते हैं. Okay, so there were two assumptions that he made. So write down the information or innovation or innovations are adapted as soon as it is passed to the receiver. As soon as it is passed to the receiver. ठीक है, तो दो assumptions है. And based on these assumptions, he said that this adoption process has 3 stages. The adoption process has 3 stages. Okay, the adoption process has 3 stages. अब the 3 stages को हम एक ग्राफ में अगर प्लॉट करते हैं, okay, let us try to plot these stages in a graph. Okay,
So there is certain period when the information is not reaching anyone. ठीक है, एक ऐसा पीरियड है जब तक इंफॉर्मेशन क्या है कि किसी एक ने किया और वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया है. ओके, सो दिस इज ए पीरियड वेर नॉट अडॉप्टेड. Okay, this actually is representing a period when the innovation is not adopted. Yeah, innovation not adopted. Okay, and now the information keeps going on. कुछ लोग क्या है कि इस information को पाते जाएंगे. Okay, so they'll receive the information and as it goes, ठीक है, if we are plotting this, so we here will write time taken to diffusion. Okay, and it represents the degree of adoption. Okay, so there is a degree of adoption ki kitna. So we see that initially when somebody receives the information, okay, this is early stage. Some people start adopting the thing. There comes a time when it reaches a peak, when many people are adopting. Okay, so this is the middle stage. After some time, what happens? Maximum number of people, if you look at this point, maximum number of people have adopted the innovation. Okay, बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट करने लगते हैं और बहुत तेजी से अडॉप्ट हो रहा है. टाइम में बहुत कम समय में काफी लोगों ने अर्ली के बाद अडॉप्ट कर लिया. ओके, एंड देयर कम्स ए टाइम when it saturates. Okay, saturation के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि everybody is doing the same thing or some new innovation is already there. So new people are not looking at the adoption of this thing, they'll prefer something else. But still some of them will keep adopting this. But the numbers will keep reducing until certain point when people stop adopting. तो यहाँ जो पहुंचा है तो ये innovation सिर्फ इस stage तक ही पहुंच रहा है. Beyond this, it is in the late stage. Again, it slows down, it saturates, and not many people are going to adopt this thing. Okay, and this line is representing the maximum adoption stage. Okay, so 3 stages: early stage, middle stage, and late stage. जिसको कई बार late stage को हम saturation stage भी कहते हैं. Okay. So many of the people call it saturation stage. Okay, so you can write down, we'll write the same thing. ठीक है, so in 3 stages, so you can write down stage 1 or early stage. Okay, stage 1 और early stage डैश करके लिखिए. There is slow rate of adoption. There is slow rate of adoption. There is slow rate of adoption due to resistance to new ideas. Due to resistance to new ideas. ठीक है, बहुत सारे लोग नया है होगा कि नहीं होगा ऐसे में भी नहीं अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, ड्यू टू रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस and also depending upon the distance, the spread of the information is slow. And also depending on the distance, the spread of the information is slow. Okay, now stage 2. Stage 2, there is a faster rate of adoption. There is a faster rate of adoption or accelerated rate of adoption. There is a faster rate of adoption as there are evidence based outcomes.
as there are evidence based outcomes, as there are evidence based outcomes. Okay. Third stage, or saturation stage, there is low rate of adoption. There is low rate of adoption. There is low rate of adoption. There is low rate of adoption due to saturation, due to saturation ऑफ द पोटेंशियल अडॉप्टर्स. ठीक है, अब तो ज्यादातर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, ये भी एक कारण हो गया. ओके, ड्यू टू सेचुरेशन ऑफ द अडॉप्टर्स, ड्यू टू सेचुरेशन ऑफ द अडॉप्टर्स और advent of some other new innovation, or advent of some other new innovation. Okay. Now, but he says that ठीक है, हमने we have taken some assumption how this adaptability is happening, but there are lot many other factors which determine the adaptation process. ठीक है, जो इसमें हमने लिखा है, this is not, the slow process is not only limited to this, the factors that we have written. Later he suggested that people may not be able to adapt if they are risk averse. ठीक है, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, if it does not work तो क्या होगा. So some of the people who are like afraid that it can result into certain failure, they will not adapt. Plus there are also people who are concerned about the utility, कि मैं अगर वो चीज नहीं भी कर रहा हूं तो मेरा काम तो हो ही रहा है, तो मुझे वो क्यों करना है. So those kind of doubts crop up in the mind of the people, and these factors also leads to less adoption at certain stage. ठीक है, so change the para and write. He also suggested that for diffusion, it is important that a person is convinced about the utility of the innovation. It is important that the person is convinced about the utility of the innovation. That the person is convinced about the utility of the innovation. Utility of the innovation, comma, he should also be aware about the methods and ways of using the innovation. He should also be aware of the methods and ways of using the innovation. And he should also be in a position to bear the risk. He should also be in a position to bear the risk associated with adoption of innovation. Adoption of innovation. Okay, risk associated with the adoption of this thing. Okay, now this is adoption process has 3 stages. Okay, ये adoption के process का 3 stage है, but he said that the whole diffusion process will go through 5 stages. Okay, the whole diffusion process goes through 5 stages. ठीक है, ये 5 स्टेज में हो रहा है. जो हमने 3 में देखा है वो तो एडॉप्शन प्रोसेस है,
लेकिन जो डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज हैपनिंग इन 5 स्टेजेस, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद क्या है कि वो सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है, अडॉप्ट करने का। लेकिन जो इंफॉर्मेशन गई वो कैसे गई? सो ही टॉक्ड अबाउट 5 स्टेजेस ऑफ diffusion process. Okay, in your answer you can write it earlier to the thing that we have written. ठीक है, आपके ऊपर चॉइस है, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेज इज अवेयरनेस। अवेयरनेस, आपको पता होना चाहिए कि ये इनोवेशन है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, कोई यूज कर रहा है। राइट डाउन। सो इनिशियल नॉलेज, अवेयरनेस में इनिशियल नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर इनोवेशन, initial knowledge about a particular innovation. Now if you have knowledge you should also have interest. आपके अंदर क्या है? इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, दिस इज अ गुड आइडिया। ओके, सो इंटरेस्ट में लिखिए द पर्सन कंसर्न takes the idea as good one. The person concerned takes the idea as good one. Okay, पहले तो आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए कि हाँ ये बढ़िया है। देन एजुकेशन। ओके, द पर्सन ट्राइज टू नो कि एक्चुअली ये है क्या, कैसे काम करेगा, मेथड्स, वेज क्या है। ओके, how it can be adapted and everything. Okay, तो पहले नॉलेज लेता है वो। so person decides, the person decides if the innovation is worthwhile. The person decides if the innovation is worthwhile. The person decides if the innovation is worthwhile. Okay, अब आपको ये भी लग गया कि दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, यू रिसर्च्ड अबाउट इट, आपने 1-2 लोगों से और बात की और आपको लगा कि नहीं बहुत अच्छा है, बट स्टिल वेदर आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ और नॉट, सो यू विल डू सम ट्रायल। ओके, सो नेक्स्ट स्टेज इज ट्रायल। ऐसा नहीं है कि आप फुल फ्लेजेड यू विल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग, पूरा अपना प्रोसेस चेंज करके नया प्रोसेस ले आए, इट कैन बैकफायर। सो सम स्मॉल एरिया, ठीक है, आप क्या है कि पहले इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेज इज द ट्रायल स्टेज। ओके, सो द इंडिविजुअल अडॉप्ट्स द आइडिया ऑन ए ट्रायल बेसिस। द इंडिविजुअल अडॉप्ट्स द आइडिया ऑन ए ट्रायल बेसिस। ओके, एंड फाइनली कम्स द adoption stage. Okay, when full-fledged adoption will happen. Okay, finally you'll use this new thing which worked for you in the trial, you'll replace the old process, you'll bring in the new process, and the process of development starts now. Okay, so 5th stage is adoption. The person adopts the innovation. The person adopts the innovation. The person adopts the innovation and makes it a part of the practices. And makes it a part of the practices. Okay, for example लेते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज, we'll take an example from India only. Okay, so in India, let us take India as an example. अब green revolution यहां पे हुआ. Okay, this is some region where green revolution happened. Okay, now tell me, यही एरिया क्यों चुना गया था? Okay, why this region was chosen for green revolution? All the things that we have studied, अभी अभी हमने क्या देखा? Awareness, interest, trial, education, everything. Some early adopters, then
The adapters were based on what? Risk taking capability and everything. ठीक है. So northwest India ही क्यों choose हुआ? Why this northwestern part of India was chosen for green revolution? Okay, क्योंकि they had more knowledge, यानी they were more aware. Okay, plus they had more risk taking capability. Okay, अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, fertilizer, mechanization. Okay, all these processes were part of the green revolution. ठीक है. Many of the people think that green revolution was always limited to these regions. Initially they were the regions which did that. Okay, so features, high yielding variety, fertilizers, mechanization, pesticide, everything that we are talking about. Okay, so these were the irrigation. So these were early adapters. They knew that thing. Okay, now initially they made themselves aware. They shown interest. Okay, they had interest. Okay, the government made trials. Okay, so all the processes that we are looking at for the development process of a region, we see that during green revolution these things happened, जो haggerstarnd कह रहे हैं. Okay, so first phase की अगर हम बात करते हैं तो in first phase all such things happened. Okay, but this was limited to this region only. ऐसा नहीं हुआ कि हर जगह फैल गया. Okay, अब इसके बाद क्या हुआ? Adoption started. Okay, in the second stage we see that it becomes faster. Many of the people are keen, so new clusters start developing in the delta region in the next phase. Okay, and everybody is like what? Everybody was demanding fertilizer, high yielding variety, and so it started, the idea started spreading throughout. Okay, but ultimately what happened? The green revolution never covered whole of India. Okay, अगर हम अभी तक का भी देखते हैं, it failed to cover whole India. For example, Sikkim is organic, Arunachal is organic. These are the states which still are not interested in the things that these people started with. Okay, and the reason was saturation in the potential adapters. अब क्या है? जमीन खराब हो रही है, ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है. Okay, so it failed to cover whole of India. Okay, due to saturation in the potential adapters. Okay, so if we look for example also, we see that this is a highly developed region. So diffusion of innovation happened and delta region especially, they adapted very fast. ठीक है, यूपी में आपको दिखाई देगा कि बहुत तेजी से लोगों ने क्या किया? Fertilizer, high yielding variety, everything replaced. Many of the places, so it reached some of the pockets, adoption started happening. But there were certain pockets, they never adopted it. Okay, so slow adoption, limited area, fast adoption reached many places, and then again some of the places who actually never adopted this thing. Okay, so if you look at the theories, this is the way you can use it. ठीक है, थ्योरी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि थ्योरी है, थ्योरीज को आप यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे. ओके, एंड दिस इज समथिंग व्हाट द सेम कॉन्सेप्ट इन विल अगेन रीड इन पर्सपेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी एज रीजनल सिंथेसिस. ठीक है, एक रीजन में कुछ करके देखा गया, वी सॉ दैट सेम कंडीशंस कैन प्रिवेल इन डिफरेंट पार्ट्स. ओके, सो
सिमिलैरिटीज आर सर्च्ड एंड देन इट इज अडॉप्टेड. ठीक है, तो इससे रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट यू आर क्लियर दैट वॉट एवर हैगरस्टैंड सेड इज विजिबल हैज एक्चुअली हैपेंड इन इंडिया. क्लियर है एवरीवन? हाँ, सभी को क्लियर है? Okay, so diffusion process is not only a static process, it is a dynamic process which takes into consideration the changes that are happening over development. Okay, सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, इस थ्योरी की? Unlike others, it is not giving you a certain concrete idea which cannot change. It in itself is accepting that changes are going to happen. Okay, so write down one statement. The study of the diffusion process, the study of the diffusion process, the study of the diffusion process clarifies the nature of constant changes, clarifies the nature of the constant changes, clarifies the nature of the constant changes and the adjustments in response to the economic and technological development, and the adjustments in response to the economic and technological development. Okay, so the theories which we are studying, they have practical implementations. Okay, though he did this thing in the Asby district of central Sweden, but what we see, that similar pattern is visible here, and this is something that we see with introduction of any high yielding variety. ठीक है, कोई नया सीड आता है, कोई नई चीज आती है, ठीक है, अगरबत्ती बनाने का नया तरीका, शुरू में कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, फिर बहुत सारे लोग करते हैं, फिर क्या है कि कम लोग करते हैं. ठीक है, so this is something that you see in each and every field. Okay, there comes a time, कोविड आया, ऑनलाइन एजुकेशन, एवरीबडी एंटर्ड. ठीक है, एवरीबडी एंटर्ड. नाउ सो मेनी टीचर्स आर देयर कि आपको पता ही नहीं है कि किस टीचर से पढ़ना है. रियलिटी यही है, कुछ लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, ओके, कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा कोई नहीं पढ़ा रहा है. ओके, सम ऑफ द पीपल आर टीचिंग वेल, सम गुड्स, सम बेटर, सम ऑफ देम आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क, बट नाउ द स्टूडेंट इज कंफ्यूज्ड कि क्या करना है. So many teachers are there, you cannot spend a year to find the right teacher. Okay, and now you'll see after some time nobody is making money with online education, so slowly the people will stop doing this thing. Okay, so everything is haggerstarnd. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि haggerstarnd is so important that you can use him in, if there is a question related to IT, related to technology, okay, or any other transport development. Everybody wants a metro in their city. ठीक है, इनिशियली देयर वर स्लो अडॉप्टर्स, बड़े शहर चाहते थे, अब सारा शहर डिमांड कर रहा है, नहीं हमें भी मेट्रो दे दो, हमें भी मेट्रो दे दो. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में भी ये यूज हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम देयर विल कम न्यू टेक्नोलॉजी विच विल बी बेटर देन मेट्रो, सो एडॉप्शन प्रोसेस विल स्लो डाउन. तो इस थ्योरी को अगर आप देखते हैं तो ये कहीं भी यूज हो जाती है. ठीक है, इकोनॉमिक वेज, everybody wants an IT industry. ठीक है, so initially if we look at 80s, there were few companies only who were working in the IT sector. There came a time when there were more than 5,000-6,000 IT industries in India. Okay, and then slowly now not many people are interested. Okay, because the potential adopters are less because of the competition, and now they are looking forward, many of the companies are interested in other services like the hotel work, restaurant, hospitality, tourism. ये अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. ओके, सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, हर चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, ट्रेड, ओके, एग्रीकल्चर, every chapter that you see, you'll see the usage of this one particular theory. तो ये आंसर्स में कुछ नहीं समझ में आया किसके बारे में लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं. ओके, एवरीबडी इज क्लियर, एंड आई होप दैट आफ्टर द लेक्चर जो मैंने बातें बताई हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि अभी मैंने बहुत तेजी में बताया बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस थिंग,
लेकिन ये सेगमेंट जो मैंने बोला है, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं मेट्रो का, आईटी का, ये लिख लेंगे एक जगह, इनसे आपका दिमाग खुलेगा, जब रिवीजन करेंगे तो दूसरे चैप्टर में यूज कर पाएंगे. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट segment where we'll be talking about the export models, export basis and regional multiplier models. Export basis and regional multiplier models. ओके, तो ये लास्ट वाला है. हमने 4 सेगमेंट में देखा था कि हम बांटने वाले हैं. सुपरफिशियल, ओके, देयर आफ्टर वी लुक्ड एट द इकोनॉमिक वन, देन स्पेशल इकोनॉमिक, एंड द फाइनली दिस एक्सपोर्ट वाला. ओके, सो अब एक्सपोर्ट वाले में सबसे पहला है एक्सपोर्ट बेसिस मॉडल. इसी का नाम ही हमने यूज किया, एक्सपोर्ट बेसिस मॉडल. ओके, सो इस नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है. इट बिलीव्स दैट एनी प्लेस which is having the potential to export something, it grows much more faster when compared with other areas. ठीक है, अगर आपके पास क्या है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ओके, यू हैव कोल, नेचुरल रिसोर्स, और यू आर मेकिंग वॉचेस दैट यू कैन एक्सपोर्ट, or you are making some utensil that you can export, you are making a ship that you can export, then chances are very high that the region where you are belonging will start developing much faster than any other regions. ठीक है, तो ये यही चीज बताता है. ओके, बिकॉज एक्सपोर्ट में क्या है, यू मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट, एंड व्हेन मोर मनी इज देयर यू इन्वेस्ट दैट थिंग टू in order to ensure that you can export more. So it becomes a cyclical process and people develop faster. ये चीज ही इन्होंने बताई है. Okay, and if you look at this model, exclusive economic zones, okay, EEZ, SEZ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इसमें बिलीव करता है, वो गवर्नमेंट डेवलप भी कर रही है. Okay, so write down a region capable of producing, a region capable of producing and exporting goods and services. एक्सपोर्टिंग का मतलब देश से बाहर नहीं, बाहर कहीं बेच देना, इसको इस तरह से अभी समझिए. ओके, द रीजन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. हिमांशु बेटा बिल्कुल नहीं करूंगा. ओके, प्रोवाइडेड कि कुछ गड़बड़ हैकिंग वैकिंग होती है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई कांट डू मच. ओके, बट जितनी सिक्योर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो मैंने कर रखा है, तो लेट्स होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके, सो एक्सपोर्ट बेसिस मॉडल, ए रीजन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज grows much faster, grows much faster, grows much faster than those areas which are not having it, grows much faster than those areas which are not having it. Okay, the export, full stop के बाद लिखिए, the export always produces the surplus, the export always produces the surplus which is utilized for the development of that region, for the development of that region, for the development of that region. Okay, now अगर हम देखते हैं, अभी झारखंड है, ठीक है, इफ यू लुक एट झारखंड, यूजुअली आप क्या मानते हैं
Okay, this is somewhat backward state आप कह सकते हैं. Okay, though it is not the best of the terms to stay, but relatively backward state में लिखूंगा. ठीक है, backward is a bad term जो डायरेक्टली हमें कहना नहीं चाहिए, बिकॉज सर्टेन एस्पेक्ट्स आर ऑलवेज गुड. ठीक है, सो रिलेटिवली बैकवर्ड स्टेट. बट यहां पे क्या है, धनबाद है. ओके, यू कैनॉट कॉल दिस सिटी एज अ बैकवर्ड सिटी. इट हैज ऑल द एमिनिटीज, ऑल द फैसिलिटीज, एवरीथिंग. व्हाई? दे हैव नियर बाय कोल माइंस. Okay, so we see that this is happening, and based on this idea that export brings the surplus, आज की डेट पे क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक zones, exclusive economic zones, okay, those who are focusing on export. But you have to understand that this is not always true. अब ये हमेशा सच नहीं है. Why? अब क्रिटिसिज्म में क्या है, the same scenario if we look at KBK in Odisha. Okay, कोरापुट, बोलांगीर, केओंझर, these are hub of minerals. Okay, you have iron, you have nearby coal. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स इसके आसपास हर जगह हैं. बट दिस इज पॉवर्टी स्ट्रिकन. ओके, इनफैक्ट उड़ीसा इट्स इन इटसेल्फ इज रिलेटिवली पुअर और रिलेटिवली बैकवर्ड स्टेट, एंड दिस रीजन 90% people are poor. ठीक है, गवर्नमेंट डेटा कुछ भी कहे, वे ऑफ लाइफ अगर हम देखते हैं, ओके, इनफैक्ट ये आप न्यूज में भी पढ़ते हैं, क्या है, 100 रुपए में बच्चे को बेच दिया. दे सेल देयर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन सर्वाइव. 100 रुपीज में उनका भी कुछ नहीं होना है. ओके, और ये आज की बात बता रहा हूं मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 years बैक. आई एम टॉकिंग अबाउट द साइनिंग इंडिया, यू नो, डेवलपिंग, जो अभी हम कहते हैं डेवलप्ड हो जाएगा. द पीपल हु आर रेसाइडिंग इन KBK, they still sell their children for 100 rupees, 200 rupees. And when some of the journalists ask them कि why you sold him, वो बोलते हैं 200 रुपए में हमारा 2 दिन का खाना नहीं होगा. We will die. We can eat only once. We will survive probably. Okay, but how this small kid, a newborn kid, can survive in the situations where we are? So they want people to adopt their children. But बहुत सारे लोग कैसे हैं जो अडेप्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि कम से कम बाहर जाएगा, जिंदा रहेगा बच्चा. ओके, सो दिस सिचुएशन इज स्टिल देयर. द गवर्नमेंट डेटा, ऑफ कोर्स, इट डज नॉट शोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर पुअर. ओके, बट इफ समबडी इज फोर्स्ड टू सेल देयर चिल्ड्रन, यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पॉवर्टी इज स्ट्रिकन दिस KBK डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा इज फेसिंग. ठीक है, तो this theory is also not universal. Many a times it will fail. Okay, now the regional multiplier theory. The regional multiplier theory. Okay, now regional multiplier theory is very simple. If a region is growing, okay, so it will have a multiplier effect. It will lead to growth of the surrounding areas. ठीक है, so any region which has started to grow,
it will have a multiplier effect and it will lead to the development of more regions. ठीक है. And दिस इज फॉर एग्जाम्पल, अब वही झारखंड वाला एग्जाम्पल जमशेदपुर को लीजिए. ओके, स्टील का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनती है. ओके, एंड दिस स्टील इंडस्ट्री has led to development of lot more industries, wire making industries, wheel making industries, nut bolt making industries, all kind of industries developed. Okay, so if you are having something which can grow, it will ultimately lead to the growth of many other things with itself. It will have a multiplier effect. ठीक है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, कुछ ऐसा नहीं है जो समझने में दिक्कत हो. ओके, सो बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तो इट इंडिकेट्स द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के दो मीनिंग होते हैं. ओके, लाइक वी आर सीइंग सम जायंट creating a monopoly, like Reliance entering each and every field, Adani entering each and every field. Some of the educational institutions that are being built, they are into every field. ठीक है, आप 12th का भी वही पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग की भी तैयारी, एसएससी, यूपीएससी, एवरीथिंग दे आर डूइंग. ओके, सो दिस इज one definition of industrial complex. The other one is this thing that we are talking about. Okay, that one industry, if it becomes very big, it will attract all other industries, and the agglomeration effect will make a complex that most of the industries which are in the surrounding are serving a big industry. That becomes an industrial complex because lot of industries stay there. ठीक है, तो जो हम इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन मोर डिटेल. अभी मैंने इसलिए बताया कि you'll have certain idea, कम से कम वर्ड्स दिमाग में रहेंगे तो आगे जब आएगा तो आसानी होगी समझने में. ओके, सो राइट डाउन द रीजनल मल्टीप्लायर थ्योरी, और इट लिख लीजिए. इट एक्सप्लेन्स हाउ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए रीजन. इट एक्सप्लेन्स how the economic growth in a region. It explains how the economic growth in a region accelerates further growth. Accelerates further growth. Okay, accelerates further growth. For example, iron and steel industry in Jamshedpur. Iron and steel industry in Jamshedpur has led to a creation of industrial complex there. Iron and steel industry in Jamshedpur has led to creation of an industrial complex there. Creation of an industrial complex there. Okay, but is it true for every place? Again, all the models that we are talking about, most of them are valid for the western part of the world. ठीक है, western part of the world में आप देखेंगे तो ये बहुत valid है. Okay, but in regional context, in Indian context, if we look at, not all of them can be applied everywhere, neither they have resulted in the similar kind of development for all the places. ठीक है, क्योंकि सलेम में भी आपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाई, भिलाई में भी बनाया है. ठीक है, बट क्या आप जमशेदपुर देखते हैं भिलाई में या सलेम में? ओके, दे आर नॉट. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये चीज हर जगह काम करती हो. दे आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. ओके, Dhanbad, Jamshedpur, Ranchi, they have seen phenomenal growth because of some specific sector. But when we look at some other areas, we do not see the same thing happening there. Okay, so they are, none of the principles, none of the theories are universal in nature. Okay, for some places
they work. For some of the places they don't work, based on the resources, based on the adaptability of the people, based on the potential of the region, okay, based on the government help and everything else. So everybody is clear? Everybody is good? All good? समझने में कोई दिक्कत तकलीफ? टेल मी. कोई ऐसा बच्चा है जिसको कहीं दिक्कत आ रही है? ओके, एक दो बच्चे हैं जो रोज सवाल पूछते हैं कि ये नहीं हुआ. पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं, उनको कहा भी था लाइव देख लो पहले, तो वो बच्चे अभी भी मान नहीं रहे हैं, और बाद में क्या है कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ. तो अभी अभी पूछेंगे क्या दिक्कत है. ओके, नाउ सिंपली वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में हमने देखा है. ओके, नाउ regional planning is for development. Let's say that you get a question, okay, कि what are the different indicators of development, तो क्या बताएंगे? आपसे कोई पूछता है टेल अबाउट योर प्लेस और व्हाट आर द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, बहुत सारे सवाल यूपीएससी ऐसे पूछते हैं जिनको आपने नहीं भी पढ़ा है तो लिख सकते हैं. ओके, एंड इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप मुझे बताइए. विल सी. अगर आप अर्बन और रूरल एरिया को ही सोच के बता दें तो शायद आपको पता हो जाए. ओके, सो द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. थ्योरीज वाला खत्म हो गया, अब कुछ जनरल चीजें जो दैट यू कैन डू बाय योर ओन. ओके, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट का मैंने क्या आपको थोड़ा सा समझने के लिए क्या बता दिया कि रूरल अर्बन, देखिए अर्बन एरिया इज रिलेटिवली मोर डेवलप्ड व्हेन कम्स टू रूरल एरिया, तो इसके कंपैरिजन से ये लिखा जा सकता है. ठीक है, हम अर्बन रूरल वर्ड यूज नहीं करेंगे, विल नॉट यूज द वर्ड अर्बन, विल नॉट यूज द वर्ड रूरल, बट comparing two places, comparing different things that are there, you can come out with a proper answer for this one. ठीक है, अगेन डेवलपमेंट इज व्हाट, किसी का बड़ा घर है, किसी का छोटा घर है, इसका मतलब क्या है, मुद्रा में अंतर है. ओके, कोई पर कैपिटा इनकम, सबसे पहला आप घर से शुरू कीजिए ना, रोड पे चले गए आप लोग सीधे. हाँ ठीक है के बेटा, बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इंडिकेटर्स क्या है, इनकम, घर पे ही क्या, नौकरी कैसी कर रहे, ऑक्यूपेशन. जो आपने पॉइंट्स लिखा दे आर वैलिड, बट विल स्टार्ट फ्रॉम द माइनर थिंग्स. ओके, यहां पे इनकम कैसा होगा, पर कैपिटा इनकम विल बी लो. in less developed areas. अब ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, मोस्टली अनस्किल्ड, अनस्किल्ड जॉब, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ओके, दैट काइंड ऑफ, मोस्टली स्किल्ड. Developed, this is underdeveloped. Developed, level of education. ठीक है, तो छोटी चीज से बड़े की तरफ जाएंगे. हाँ, अपने बच्चे
वेरी गुड, पार्क तक पहुंच गए बेटा, वहां पूरे खेत के खेत पार्क ही होते हैं। ओके, अब रूरल हमने कहा है, अब पंजाब के गांव क्या है, दे आर डेवलप्ड। ठीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड पे आप देख के, दे आर ड्राइविंग ट्रैक्टर्स, दे हैव हार्वेस्टर्स, यानी स्किल्ड लोग एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व हैं। ओके, दे आर अवेयर ऑफ द न्यू प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग। ओके, नम एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन अलग चीज है, एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, कम लोग एम्प्लॉयड हैं। ओके, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट, पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा है आपने, बर्थ रेट, sex ratio. Okay, so the things that you have already studied, इसके लिए कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, हेल्थ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, दैट मोस्ट ऑफ यू स्टार्टेड विथ, सबने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। एजुकेशनल फैसिलिटीज, वो पहले भी आप डाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज दैट आर अवेलेबल। ओके, सर्विसेज आर अवेलेबल। हाँ धीरज बेटा, ठीक है। ओके, सो दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, हमने इसको यूज किया है। ओके, अब यही इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जाएगा तो यूल टॉक अबाउट सेम थिंग्स। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो एंड एवरीथिंग। तो कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। many of the chapters, okay, though we see that different things are asked from different chapters, but the things that you are already studying in some other areas, okay, this is the thing which is responsible for indicating। okay, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, डू यू थिंक दैट दिस शुड बी टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ओनली? ओके, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होनी चाहिए। ओके, दिस इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यू मस्ट टॉक अबाउट social infrastructure. Okay, there is some area where all the people are equal, having equal access to the resources. ठीक है, रोड पे हर आदमी वैसे ही यूज कर रहा है, स्कूल ऐसे ही यूज हो रहा है, that is urban area. But if you'll go to rural area, there can be certain sections who are not allowed to use the infrastructure. ठीक है, तो इसके दो पर्सपेक्टिव से आप बात कर सकते हैं। Then you can talk about the indicators, human development index, gender index, ठीक है, those kind of things you can talk about, various indices. So even if the question is of 20 marks, okay, even if there is a essay, you'll be able to write. Okay, and this is something that you need to try to understand, that not every topic has to be studied in detail, because already some of the topics are spread. You already have learnt about that topic somewhere else, okay, that you can do with ease. Clear है everyone? हाँ, लिटरेसी, अवनी बच्चे, वेरी गुड। ओके, एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी, ओके, ये सारी बातें भी लिख सकते हैं आप। यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट द थिंग्स, ठीक है, जिससे आप इंडिकेट कर सके कि चीजें अच्छी चल रही है या नहीं है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट the development,
ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर रीजनल इम्बैलेंसेस? ठीक है, कुछ एरियाज बैकवर्ड हैं, कुछ आगे बढ़ गए, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, आपने डेवलपमेंट का इंडिकेटर देखा, सो इस पे जो क्या है कि निगेटिव है, दैट इज नॉट डेवलप्ड, यहां जो पॉजिटिव है दैट इज डेवलप्ड, इट मीन्स दैट देयर इज ए इम्बैलेंस. सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस? कुछ तो हमने थ्योरी में ही पढ़ लिए. Causes of regional imbalances. Okay, why India is not developed? Historically we have been exploited. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, थिंक ऑफ जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, देयर कैन बी हिस्टोरिकल रीजन्स, okay, the historical reasons. Some of the regions are not developed. Why? Because they were colonies historically, और these are the areas. Specifically आप यूपी बिहारी क्यों इतना बैकवर्ड है? ठीक है, अगर हम देखते हैं उड़ीसा यूपी बिहारी क्यों बैकवर्ड है? बिकॉज दे वर प्रोवाइडर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, तो दे वर एक्सप्लॉइटेड मोस्ट. द ब्रिटिश वर मोस्टली इंटरेस्टेड इन दिस रीजन. ओके, सो लैंड को भी यहां यूज किया जबरदस्ती, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार. ओके, द प्रोडक्टिविटी लेवल्स वर सो हाई दैट दे फोर्स देम टू ग्रो इंडिगो. उससे जमीनें खराब हुई, उनको पीट मार के क्या है करवाया एक ही काम, क्योंकि हमें डाई चाहिए. ओके, सो इवन इफ यू लुक एट सम ऑफ द रीजन्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर देयर. हाँ धीरज बेटा, वेरी गुड. ओके, देन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. Okay, if you look at the geographical factors, some of the regions they are mountain. Okay, some of the regions they are plateau, वहां कुछ हो ही नहीं सकता है, the productivity level is less. They are dense, some of the regions are dense forest, some of the areas are desert. Okay, so the geography is not allowing them to grow with when compared with other regions. Okay, हाँ भाव्या बेटा. Now socio-cultural factors. Okay, there are certain places where the people are reluctant to go outside and settle, go outside and work. ठीक है, for example if you look at northeastern states, मणिपुर पे अभी ठीक है, अभी violence is there, but mostly these are the people who go outside, they work everywhere, and so relatively more development is seen there. You'll see that the education levels are good and everything is good. But if you'll go to Arunachal Pradesh, most of the people, even when they come outside for studies, they'll tend to go back there. ठीक है, तो कुछ कुछ belief system आपका culture जो आप follow कर रहे हैं. Okay, so some of the people who are still into primitive mode of living. ठीक है, some of the people, if you go to the tribal areas, still people are comfortable with the primitive way of life. If you'll go to the rural areas, still people are more comfortable with the primitive way of life. Okay, so the development is less. हाँ अपनी बच्चे बिल्कुल भव्या. ओके, सो पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात कर सकते हैं आप. सम ऑफ द एरियाज विच आर ऑलवेज फाइटिंग. ओके, देयर इज नो स्टेबल गवर्नमेंट, और द गवर्नमेंट विच इज रूलिंग दैट एरिया, अभी कोई डिस्ट्रिक्ट कैसा है वहां कोई और एमएलए चुन के आ गया. ठीक है, अब रूलिंग गवर्नमेंट का नहीं है.
तो गवर्नमेंट फंड नहीं देगी, ओके, क्योंकि हमारे पार्टी का आदमी नहीं है। और इफ वी लुक एट कंट्री लेवल, इफ द स्टेबल गवर्नमेंट इज नॉट देयर, लोग हल्ला कर रहे हैं, सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन हो जाए। लुक एट सीरिया, लुक एट पाकिस्तान, बाकी तो छोड़िए, लुक एट श्रीलंका, ओके, श्रीलंका में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ओके। इकोनॉमिक फैक्टर्स, यही दोनों एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं, ओके। द डेवलपमेंट इज लाइक लॉट ऑफ डेट ऑफ पाकिस्तान, लॉट ऑफ debt for Sri Lanka, they are not developing, okay. Some of the regions fail to gather enough resources or money to develop, ठीक है। So everybody is clear now? Demographic factors, high dependency ratio, illiteracy, high dependency ratio, illiteracy, okay. So those kind of things जो हमने पढ़ा था, तो if you'll focus on these things, you'll see that it is very easy to write एग्जाम्पल। अपने मन से, आप सबको पता है, इसमें से हर आदमी अलग अलग एग्जाम्पल सोच सकता है। यू कैन ब्रिंग यूनिकनेस टू योर आंसर, एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दिस थिंग, okay, you have to write a statement and you have to give an example, okay. Even if this question is for 20 marks, you come up with few examples, write one statement, you are more than 300 words and you are done, okay. So it's quite easy to write if you are willing to think a little more, okay. यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, वो इकोनॉमिक में ही आ जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट है, ओके। जो प्लान बनाते हैं आप, नीति आयोग है, इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल का मतलब आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ना समझे, ओके। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड ऑल, ओके, दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं? कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो यू कैन टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अभी ये बोला तो सिर्फ लालू जी और ममता दीदी और मोदी जी याद नहीं आने चाहिए, ओके। पॉलिटिकल का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है, ओके। So everybody is clear with the, everybody has clear cut understanding of what is this? किसी भी एरिया में कोई दिक्कत है तो पूछिए, okay, because these are simplistic things that you should know, और जिसपे क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन यही जब आप लिख रहे होंगे, आंसर्स आप लिखेंगे, तो इन सर्टेन एग्जाम्पल्स यू हैव टू ब्रिंग इन द थ्योरीज एज वेल, कि उस थ्योरी में भी ऐसा कहा गया है, ओके। तो वो आप कर सकते हैं, बट इट विल हैपन ओनली आफ्टर यू रिवाइज, ओके। एंड विल सी कि हाउ इट कैन बी डन। नाउ विल लुक एट सम ऑफ द पर्सपेक्टिव्स विच आर मोर रेलेवेंट, ओके। अब हमने रीजनल ये चीजें देख ली हैं, अब हम रीजनल प्लानिंग पे जाएंगे, एंड वी आर मोर कंसर्न्ड विद द प्लानिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा ज्यादा कंसर्न क्या है कि हम प्लानिंग पे जाएं, ओके। सो विल टॉक अबाउट द प्लानिंग, ओके। थ्योरीज प्लानिंग के बारे में भी हम थोड़े से देखेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव, बट विल लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। विल स्टार्ट विथ इंडिया, ठीक है। विल स्टार्ट विथ इंडिया, इंडियन पर्सपेक्टिव, ओके। और वर्ल्ड व्यू के लिए आई फाइनली सब खत्म करने के बाद आई गिव यू अ
way how to write about the planning questions, or it will look easier then. Okay, so experience of regional planning in India. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ लिया है? ओके, इकोनॉमिक्स किसने किसने बच्चे ने पढ़ा है? भव्या, धीरज, सुमन, अवनी. हाउ मेनी ऑफ you have studied this? First 5-year plan, second 5-year plan, पढ़ा है? ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट 5-year प्लानिंग को आप क्या है कि रियल प्लान मान सकते हैं क्या? Was there some clear-cut plan how to go about it? Okay, for the development of India. ठीक है, प्लान था, कोई बात नहीं है. जिन्होंने नहीं पढ़ा के यू हैव नॉट स्टडीड, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, नॉट एन इशू. हाँ, प्लानिंग कमीशन ने किया, सब हालत खराब हो गई थी इंडिया की. ठीक है, हम आज़ाद हुए थे, हमने बनाया. ओके, बट इफ यू लुक एट द प्लानिंग प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द फोकस ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान was agriculture. तो इन रियल सेंस वी कैनॉट से कि देयर वाज पर्सपेक्टिव ऑफ प्लानिंग. ठीक है, जो रीजनल प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, वर्ड है रीजनल प्लानिंग. सो देयर वाज नो रीजनल प्लानिंग फर्स्ट 5-year प्लान. एग्रीकल्चर, ओवरऑल एग्रीकल्चर. ठीक है, इन द सेम मैनर if we talk about second 5-year plan, was there a regional planning? किसी रीजन को पर्टिकुलर फोकस करके हमने किया. हाँ, अपनी बच्चे वेरी गुड, सिर्फ हमने एग्रीकल्चर को देखा. बट सेकेंड 5-year प्लान इफ वी लुक एट, अब क्या हुआ? Okay, the idea of balanced regional development was floated. Okay, but it was not given eminence. Okay, the focus was industry. Again, second 5-year plan क्या है? Okay, there was mention of balanced regional growth. But not enough emphasis. यहां भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ किया. Okay, the plan has an element of this thing, but in reality there was no dedicated chapter. ठीक है, 5-year plan आता है तो every sector जो जो focus area है, it becomes the heading of the chapter. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ऐसा देखते हैं आप. ठीक है, that kind of primary document had nothing as such. Okay,
socio-economic development, self-sufficiency, industry. Okay, these were there. And talk of balanced regional growth or development was there. Okay, but there was no separate chapter as such. It was only the third 5-year plan. ठीक है, गवर्नमेंट प्लान्स जो बनाती है 5-5 साल के लिए जब आती है, it was only the third 5-year plan. Balanced regional development emerged as a chapter for the first time. Okay, became a chapter for the first time. Okay, so if there is a question, you have to understand that if you don't write about first 5-year plan and second 5-year plan, it's absolutely fine. जितना मैंने लिखा है इतना भी नहीं लिख के यहीं से स्टार्ट कर देंगे, फिर भी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसा माना जाएगा. Okay, so in this third 5-year plan, okay, many regions were selected. Okay, in this regions were focused. रीजनल प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं तो यहां रीजन्स फोकस किए गए पहली बार. ओके, एंड दिस दामोदर वैली प्रोजेक्ट आया इसी में, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. ओके, द दंडकारण्य एरिया, बैकवर्ड एरिया जो भी है, some project for the Dandkaranya area. Okay, Rihand project, Bhakhra Nangal command area. Okay, Rihand project. So now some of the areas were क्लियरली विजिबल कि रीजन की डेवलपमेंट के लिए हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. ओके, सेकेंड 5-year प्लान इंडस्ट्री वेयर वो रीजन इनडायरेक्टली हो गया. ठीक है, सम ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर प्लेस्ड इन सम ऑफ द प्लेसेस वेयर रीजनल डेवलपमेंट विल हैपन, बट द फोकस वाज प्लेसिंग द इंडस्ट्रीज. बिग इंडस्ट्रीज हमें करनी है. ठीक है, यहां क्या है कि जगह फोकस हो गया. ओके, सो ए सेपरेट चैप्टर वाज एडेड. ओके, and attention was given. राजस्थान में क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल का इंसेप्शन इसी पीरियड में हो गया. ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन इसी पीरियड में आ गया. सो एवरीथिंग इफ यू लुक एट, ओके, इफ यू अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इन अ पर्टिकुलर रीजन. ओके, सो दीज एलिमेंट्स आर क्लियरली विजिबल. ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, again it was not enough. Okay, this became a reason for regional imbalance. Okay, it became a reason for regional imbalance. Okay, because every resource was concentrated. Okay, everything these were concentrated in specific regions. And rest of the places were neglected. बाकी जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या हुआ, वो नेग्लेक्ट कर दिया गया. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए रीजन. जब हम लिखते हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द imbalances in the development of India. Okay, so regional planning is also one of the reasons, though it was done for
the betterment. But when you focus the resources in some region, तो सराउंडिंग रीजन तो अपने आप ही बैकवर्ड हो गए, क्योंकि आपने क्या है एक रीजन को डेवलप किया, सारे रिसोर्सेज दे दिए, उसकी सराउंडिंग एरिया को वो नहीं मिला तो वो बैकवर्ड हो गए. ओके, एंड दीज एरियाज वेयर द इन्वेस्टमेंट वाज डन, दे इम्प्रूव टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ओके, सो ये चीज हमें थर्ड 5 ईयर प्लान से और ज्यादा दिखाई देता है. पहले सभी बैकवर्ड थे, अब रीजनल इम्बैलेंस से स्टार्ट होता है. ओके, नाउ फोर्थ 5 ईयर प्लान. फोर्थ 5 ईयर प्लान का खासियत क्या है? दिस फोकस्ड ऑन रीजनल पॉलिसीज आफ्टर डूइंग सर्वे. ठीक है, यहां हमने क्या डिटेक्ट किया? इम्बैलेंसेस आए प्लस द आउटकम्स आर नॉट देयर. ओके, सो फोर्थ 5 ईयर प्लान, टारगेट ओरिएंटेड बेनिफिशियरीज प्रोग्राम वेयर स्टार्टेड. ओके, तो यहां पे क्या है? ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम. अब किसी रीजन में ड्रॉट आ रहा है तो ड्रॉट को हटाओ. ओके, सो फोर्थ 5 ईयर प्लान. Okay, so this is target oriented policies. Write down. Regional policies became significant. The regional policies became significant. The regional policies became significant. And a specific planning process was implemented. And a specific planning process was implemented by the survey of the regions. By the survey of regions. By the survey of regions. By the survey of regions. Okay, अब सर्वे भी किया, देन फुल स्टॉप. टारगेट ओरिएंटेड बेनिफिशियरी प्रोग्राम्स वेर लॉन्च्ड. Target oriented beneficiaries program were launched. Okay, for example, drought prone area program, DPAP. For example, drought prone area program. Okay, full stop. Steps were taken to identify the backward regions. Steps were taken to identify the backward regions by constituting committees. By constituting committees like Pandey Committee, Wangchu Committee. Okay, so if you look at these committees, they were given the responsibilities to identify the backward regions. उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके बारे में क्या स्टेप्स हो सकते हैं. ओके, यही कौन सा फॉर्मूला है? आप इकोनॉमिक्स में गाडगिल फॉर्मूला पढ़ते होंगे. ओके, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स. Okay, transfer of the remittances or other form of money from center to state. So all such steps were taken, okay, so that the regions which are backward are not only being identified, but the financial assistance is also being provided to develop those regions. जो बैकवर्ड हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलना चाहिए. ओके,
नाउ यहां पे क्या किया, planned development of the area became a target. Write down, the planned development of area became a target. Okay, so थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या है, दंडकारण्य रीजन को हमने रीजनल डेवलपमेंट की कोशिश की. इट वाज नॉट मच प्लान्ड, बट इन द फोर्थ एरियाज लाइक बुंदेलखंड, okay, planned development was focused. Okay, so planned development was focused for this area. Now fifth 5 year plan, if we talk about fifth 5 year plan, it brought the सेक्टोरल अप्रोच. ठीक है, यहां पे क्या है कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए असिस्टेंस देने के लिए. okay, the chances are very less that you'll get a question on this, but still you have to know, क्योंकि ये यहां काम नहीं आएगा, आपके इकोनॉमिक्स वाले पेपर 3 में काम आ जाएगा. ओके, और प्लानिंग से क्वेश्चन आपका पेपर 2 में भी आ सकता है, जीएस में भी. सो यू विल गेट द बेनिफिट इन पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 of general studies. So we are covering this thing in detail. Okay, in the fifth 5 year plan, the focus was on consolidation of already running programs. ठीक है, जो चल रहे हैं उनको भी फोकस ज्यादा करना, कंसोलिडेशन, वहां डेवलपमेंट दिखाई दे. The fifth 5 year plan, the focus was on consolidation of already existing programs, consolidation of, हाँ, गरीबी हटाओ. ठीक है, गरीबों को ही हटाने के चक्कर में पड़ गए थे, गरीबी हट नहीं रही थी. okay, consolidation of the already existing programs. And the government adopted area development approach. Full stop. Specific programs were launched with specialized agencies and special target groups. Okay, so tribal development agency projects. Okay, projects like tribal development एजेंसी प्रोजेक्ट. ओके, तो यहां सिर्फ मनी एंड एवरीथिंग कंसोलिडेशन में ये जो इसमें हो रहा था सारा किया इन्होंने. ओके, स्पेसिफिकली, बट नाउ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वेर ऑल्सो असाइंड सो दैट दे कैन हेल्प द रीजन्स टू ग्रो. ठीक है, ओवरसी करके उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये देखते हुए हैंड हेल्ड अप्रोच भी गवर्नमेंट ने लिया. ओके, गवर्नमेंट ट्राई टू डू दिस थिंग. ओके, and this is also the plan period where the concept of sub plans emerged. ठीक है, एक बड़ा प्लान है, उसमें सब प्लान होना चाहिए. ठीक है, बड़े अप्रोच से एक साथ चलते हैं तो पता नहीं चलता है इफेक्टिव है या नहीं. ओके, सो प्लान्स
had sub plans. Okay, so write down, this is also a plan period. This is also a plan period where the government also emphasized on making sub plans. The government focused on making sub plans. Okay, as part of the major plans. Okay, और बहुत सारे प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एवरीथिंग. ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. Some of the important programs were launched during this period. Okay, hill area development program, command area development program. Okay, so problem based area, hill area is a problem based area. Okay, command area. So those kind of programs were launched. Now, sixth 5-year plan. Sixth 5-year plan. हाँ, गरीबी हटाओ वाला एम्प्लॉयमेंट ये सब आप लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो रीजनल नहीं है ना बच्चे. वी आर लुकिंग एट द रीजनल पर्सपेक्टिव. पढ़ क्या रहे हैं वो ध्यान देंगे. एक रीजन, गरीबी हटाओ फॉर देश के लिए ना, रीजनल प्लानिंग की बात हो रही है. ओके, सिक्स्थ 5-year प्लान. नाउ वेरी इंटेंसिफाइड वर्जन ऑफ द प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग पे आ गए. अभी प्लान, सब प्लान, नाउ मल्टी लेवल प्लान्स. ओके, एट वेरियस सिक्स्थ 5-year प्लान. Intensive regional planning methodologies were adopted. Intensive regional planning methodologies were adopted. Okay. Intensive methodologies were adopted. Okay. Integrated approach. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, integrated approach to the problem of regional imbalances. Okay, and now this is the plan period, multi-level planning. Okay, the moment multi-level planning is there, the growth center concept was pursued by the government. ये वो पीरियड है जहां ग्रोथ सेंटर, ओके, 60s में भी हुआ था, बट 1988 में पॉलिसी फ्रेमवर्क में आ गया, बट दिस ग्रोथ सेंटर कॉन्सेप्ट वाज पुश्ड हियर ऑनवर्ड्स. ठीक है, गवर्नमेंट फोकस करने लगी. ओके, इट बिकेम द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने. ओके, सो ऑल द थिंग्स, all the resources which are at disposal must be employed for the rural development. तो broader perspective पे government ने देखना start किया. Okay, so write down, integrated rural development program was launched during this period. Integrated rural development program was launched during this period. Integrated rural development program was launched during this period. National Rural Employment Program. National Rural Employment Program. National Rural Employment Program. Okay. Now, this is also a program, 5-year plan, where environment became part of the
regional planning. Okay, the aspect of environment became part of the regional planning. Write down, in this plan, the aspect of environment became an integral part of planning, regional planning. The aspect of environment became an integral part. Okay, of the regional planning. Now, seventh 5-year plan. Okay, this is important because it identified two important determinants of regional planning. Two important determinants of regional planning. Okay, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया इन ऑर्डर टू डेवलप एनी एरिया, okay, we have to focus on the agricultural productivity of the region and developing the human potential. Okay, agricultural productivity and developing human potential. And if somebody is focusing on these two aspects of the region in question, किसी भी रीजन में, अभी वो बुंदेलखंड ही है, दंडकारण्य है, यहां से आप जमीन से क्या उगा सकते हैं और लोगों को स्किल्ड कैसे बना सकते हैं. ओके, सो अगर वो दोनों चीजें हो गई, द रीजन्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट. ठीक है, इनको अपने आप ही बेनिफिट्स मिलने लगेंगे. द रीजन विल स्टार्ट डेवलपिंग. ओके, एंड ऑल. नाउ watershed approach became the core. ठीक है, watershed is an area which is fed by similar stream. water bodies जो एक connected है, एक river है, उसके branches जहां जहां तक. So watershed approach was also adapted here. So write down, watershed development. Watershed development. Watershed development became the core of regional planning. Became the core of regional planning. Hundred growth centers were identified across the country. 100 growth centers were identified across the country. ठीक है, रीजनल अप्रोच में क्या है, ग्रोथ सेंटर्स डेवलप कर 100 जगह. द गवर्नमेंट डिसाइडेड, दो द प्लान फेल्ड मिजरेबली, कुछ नहीं हो पाया था, बट एटलीस्ट वी नो दैट देयर इज समथिंग टू चीयर फॉर, बिकॉज ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर कॉन्सेप्ट से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड होकर 100 सेंटर्स बनाना चाहती थी. ओके, नाउ द 8th 5-year plan. Again, the government suddenly shifted its focus on economic planning. Regional planning took a back stage. यहाँ regional planning नहीं रहा. Okay, 8th 5-year plan, all the things that were being done, okay, were there, but regional planning concept जो है, it took a back stage. Okay, तो again first और second की तरह
ट्रू सेंस में अगर देखा जाए तो द एलिमेंट्स ऑफ रीजनल प्लानिंग एग्जिस्टेड बिकॉज ऑलरेडी समथिंग वॉज डन इन द पास्ट एंड दे कंटिन्यूड विथ सम ऑफ द प्रोग्राम्स बट नो नथिंग न्यू वॉज डन. ठीक है, बहुत सारा नया कुछ करके देखते हैं कुछ फायदा होगा, दैट काइंड ऑफ अप्रोच वॉज नॉट देयर. ओके, सो 8th 5-year plan. The role of economic planning was redefined in a manner. The role of economic planning was redefined in a manner which left little scope for regional planning. And we can say that 8th 5-year plan, and we can say that the 8th 5-year plan completely lacked regional perspective. The 8th 5-year plan completely lacked regional perspective. Okay, क्योंकि यहां आप इंडिकेटिव प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आ गया. ओके, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बेसिकली 8th 5-year plan was a indicative planning, and that kind of planning when you are more oriented towards the market. Okay, so you are not looking at something which is static. Okay, you are entering an area to plan where a lot of dynamism is there. So the government failed to recognize that regional planning can be an important perspective here. ठीक है, तो इसकी वजह से रीजनल प्लानिंग को मौका नहीं मिला. ओके, नाउ 9th 5-year plan. If we look at the 9th 5-year plan, now फिर से क्या है, रीजनल प्लानिंग अप्रोच वाज नॉट एम्फेसाइज्ड. ओके, यहां पे क्या किया, गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाम का एक चैप्टर ऐड कर दिया. ओके, एंड दे फोकस्ड मोर ऑन रीस्ट्रक्चरिंग द प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू एलिविएट द पॉवर्टी. अब फिर से अलग से यूनिवर्सल नेचर के प्रोग्राम्स यहां भी पुश किए गए. ओके, द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट वॉज ऑन ब्रॉड पर्सपेक्टिव. गवर्नमेंट एक्सेप्टेड कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम नहीं बदल सकते हैं. ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए वो हमें मिल ही नहीं रही. ओके, सो अगेन सिमिलर थिंग हैपेंड 9th 5-year plan में भी आपको रीजनल प्लानिंग अप्रोच नहीं दिखाई देता है. ठीक है, भारत निर्माण की बात हो रही है, इंदिरा आवास योजना की बात हो रही है. ओके, बट दीज आर यूनिवर्सल प्रोग्राम्स. ओके, so again 9th 5-year plan, no regional perspective. Okay, so write down the regional planning approach. The regional planning approach again not emphasized. The regional planning approach was again not emphasized. And the government accepted that the private investments, the government accepted that the private investments cannot help to eliminate the regional disparities. The regional disparities. The government failed to focus on regions and instead focused on the states. The government failed to focus on the regions. Focused on the states instead of focusing on the regions. Okay, now 10th 5-year plan.
10th 5-year plan. द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फॉली. अब इनको समझ में आया कि हम गलत तरीके से जा रहे हैं. स्टेट को पैसा देने से स्टेट क्या है कि रीजन्स को डेवलप नहीं कर रही है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वहां और इन्वेस्टमेंट कर रही है, एंड दे आर डूइंग इट इन हैप्सर्ड वे. तो बैकवर्ड एरियाज ऑफ द स्टेट आर रिमेनिंग बैकवर्ड. ओके, so the government recognized in the 10th 5-year plan, okay, the moment they came out with the 10th 5-year plan, they said that something wrong is going on. Okay, and they adopted a regional model of development जिसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का कॉन्सेप्ट लाई गवर्नमेंट, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज किया था कि इफ वी कैन डेवलप सम एरिया एग्रीकल्चरली, ओके, दैट दे हैव डन इन 7th 5-year plan, then you can achieve the objective. So they again came back to the regional model, and in this they brought the concept of agroclimatic zones so that the development can be done based on a region which will be part of the agroclimatic zone. Okay, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट जोन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए उससे डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट हुआ. ओके, सो राइट डाउन. The government itself questioned the previous plans. The government itself questioned the previous plan models. Okay, and recognized it was not good for regional development, and recognized that it wasn't good for regional development, and recognized that it wasn't good for regional development, recognized that it wasn't good for regional development. Okay, hence they came up with some regional models. Hence they came up with some regional models like agroclimatic zones, like agroclimatic zones, like agroclimatic zones, and fixed the target for every state, and fixed a target for every state. Okay, the government pushed the regional perspective even in population policies. The government pushed for regional policies. Okay, pushed for regional orientation in even population policies. Okay, now again 11th 5-year plan. Okay, 11th 5-year plan. Now 11th 5-year plan, if we look at, the government came up with the concept of equity. Okay, and the focus was on redressing the regional disparity. Okay, it was a said objective to eliminate the regional disparity. Okay, but इसमें भी क्या है, some of the regions were identified. Western Ghat development program was brought in. Hill area development program में changes किए. Okay, so write down. The government recognized. Rohit beta, a very good afternoon. A very good afternoon. You are way too late, but make sure that you are covering the things that we have discussed. Okay, because definitely you can find a question on this, and this is important for GS and
ऑप्शनल, ये पूरा चैप्टर ही आप देखेंगे कि बाकी चीज़ें भी जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज को छोड़ के, anything can be asked in GS, and this perspective will help you to write better answers. Okay, so write down, the government recognized that there is a lot of variation at the regional level, that there is a lot of variation at the regional level in education, health and income parameters. In education, health and income parameters, and it is important to address this regional disparity, and it is important to address this regional disparity, and it is important to address this regional disparity. Okay, the government mostly focused on is strengthening the existing regional plans. The government mostly focused on strengthening the existing regional plans. Okay, like hill area development program, Western Ghat development program, etc. Western Ghat development program, etc. Okay, and thereafter if we talk about the next plan, it was never on ground, कुछ हुआ ही नहीं. ठीक है, फिर आपका नीति आयोग का जमाना आ गया इसके बाद. And if you look at the policies of the नीति आयोग, you can definitely tell that they are focusing on the regions. ठीक है, उनका focus है अभी भी, they are focusing on the same thing. And for this thing, जो प्लानिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नीति आयोग आने के बाद आपका क्या है, दे स्टिल आर प्लान्स. ठीक है, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वैसा है, बट एग्जाम में यूजुअली द प्लानिंग पीरियड ही पूछता है. तो द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज मोर देन सफिशिएंट. एंड व्हेन इट कम्स टू नीति आयोग, इफ देयर इज अ क्वेश्चन, you just have to mention that after the planning commission was removed, Niti Aayog is taking care of the various things, and now the government is looking at the decentralization process where the states are given more opportunity to identify the backward areas and take actions. But still, for some of the important aspects, the government is focusing on the regional development approach. और जो करंट में न्यूज में आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो कोट कर देंगे. ठीक है, सो यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो बेसिकली इफ यू लुक एट ऑल द थिंग्स, आज तक जो प्लानिंग हुई है उनको हम सब, ऑल द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, रीजनल प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट. अगर ऐसा एक क्वेश्चन आता है जो पूछता है कि किस किस पर्सपेक्टिव पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है, ओके, सो रीजनल प्लानिंग बाय गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, ओके, सो ऑल द प्लान पीरियड्स वी हैव सीन, बट यू कैन गेट ए क्वेश्चन विच विल आस्क व्हाट वाज द फोकस एरिया ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस. ओके, सो यहां गवर्नमेंट ने लेटर स्टेजेस, शुरू में इंडस्ट्री एज ए होल, बट देन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द लैगिंग रीजन्स गवर्नमेंट का फोकस रहा है. Okay, we are summarizing the whole planning period. Okay, so government has tried over years to bring some industry. हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आयरन एंड स्टील ले आए बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, पीएसयूज को ट्राई किया कि हम इनको भेज देते हैं. ओके, डायरेक्टली इफ सम बिग इंडस्ट्री कैन नॉट बी देयर, लेट अस send the PSUs, or some subsidiaries of big companies were in the subsidiary companies को invite कर दे. Okay, so these kind of activities the government has always tried in most of the backward regions of the country. अब जाए या मत जाए,
ठीक है, बट इफ यू सी PSUs आर वर्किंग इन इवन दोज एरियाज जहां बाकी कोई लोग नहीं जा रहा है. ओके, एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इन्होंने बहुत सारा पुश किया. लेकिन अगर आप यूपी बिहार की बात करें, ठीक है, MP की बात करें, उड़ीसा की बात करें, इट फेल्ड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स. सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते थ्रेट्स की वजह से. ओके, नाउ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन्स, ये सेड ऑब्जेक्टिव हमेशा से ही था. Okay, and for this government has taken many steps. Okay, there were many policies, many programs to benefit. ठीक है, so high yielding variety, green revolution सब. Okay, green revolution, HYV, irrigation, awareness campaigns. Okay, awareness campaigns. So industry and this one, it is there. ठीक है, infrastructure facilities in the backward regions. And this is something that you can see now as well. अभी भी गवर्नमेंट का अप्रोच ये सारे हैं. The government is still focusing on all the things that we are writing here. Okay. Now, like we have seen, 11th plan से पहले ही गवर्नमेंट गाडगिल फॉर्मूला में भी क्या है, मोर रिसोर्सेज नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट. इसकी तरफ हर बार बढ़ी जा रही है गवर्नमेंट. ओके, एवरी फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट यू विल सी दैट सेंटर इज गिविंग मोर टू द स्टेट्स. इट इज कीपिंग लेस विथ इटसेल्फ एंड इज गिविंग मोर टू द स्टेट. तो ये कर रही है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स. एंड वॉट एवर यूल रीड इन पॉलिटी, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन मेंशन द आर्टिकल एंड यू कैन राइट. इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू यूज दोज दैट नॉलेज एज वेल दैट यू हैव एक्युमुलेटेड इन GS. ठीक है, GS में आपके क्या है कि आर्टिकल्स आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि किस आर्टिकल के हिसाब से ये होता है. ओके, एंड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स फॉर बैकवर्ड एंड लेस डेवलप्ड रीजन्स. ओके, और इन सब में आप आज के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं या प्लानिंग पीरियड वाले भी दे सकते हैं जो आपने पढ़ा है. तो बेसिकली रीजनल प्लानिंग अप्रोच, इफ देयर इज अ क्वेश्चन विच इज नॉट क्लियरली मेंशनिंग दैट यू हैव टू टॉक अबाउट ईच प्लान, ओवरऑल what are the different things on which the government has focused in regional planning or regional development. Just make 5 things as your heads, write about some of the examples that you know, okay, that you have read in GS, that you have read here, and you'll have a complete answer. Okay, and you can give some of the suggestions also that you read in newspapers. You can come up with any of that. Okay, so everybody is clear. Now specific programs, tomorrow we'll start with the specific programs that the government has done for some of the regions, और हम examples देखेंगे उसका फायदा क्या हुआ, डेवलपमेंट हो पाई या नहीं. तो नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव, पहले वाला क्या है, पेपर 1 के हिसाब से हम देख रहे थे. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू पेपर 2, एंड फाइनली इन द लास्ट लेक्चर आई विल गिव यू समथिंग which will help you to write better answers in both paper 1 and 2. Okay, यहाँ तक clear है. So tomorrow we'll start about programs. वो आसान होंगे, जैसे ये वाला सेगमेंट थ्योरीज, ये क्या है कि थोड़ा सा एफर्ट है, क्लास में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट अल्टीमेटली you'll see that in revision it is
lot easier. Okay, because if you have understood once, we have taken enough time, but revising the human geography part is always easy. It takes a lot lesser time. ठीक है. हाँ सुमन बेटा, कल करेंगे. हाँ रोहित बेटा, everything is available. Okay, I did not see your message. You need to check the playlist. Okay, I couldn't see your message, but you need to check the playlist and you'll find that. Whole का मतलब क्या है कि अभी चल रहा है. Okay, we'll complete it. Okay. के बेटा आप लोग नए बच्चे इतने कमजोर होंगे तो कैसे काम चलेगा. 6 hours of writing in mains. Okay, 6 hours every day. Okay, and not the way you are doing here. ठीक है, मजे मजे में लिख रहे हैं, सर कहानी बता रहे हैं, फिर 2-4 वर्ड लिख लिया. कंसिस्टेंट राइटिंग. 3 hours बाहर आए, फिर गए, फिर 3 hours. Okay, so you have to have certain practice of doing this thing. ठीक है के. So अभी जो पेन लेंगे उसका फायदा आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगा. ओके, जो अभी आराम से रहेगा उसका फ्यूचर बहुत. ओके, सीधा नियम है, वर्क हार्ड फॉर 5 years. ओके, सिंस योर ग्रेजुएशन. बचपन में क्या किया भूल गए, ग्रेजुएशन किया. एनीबडी हु इज गिविंग हिज बेस्ट 5 years, मतलब एब्सोल्यूट हार्ड वर्क इन एनीथिंग ही वांट्स टू अचीव, he'll always have a happy and great life later for rest of the 50 years or so, if someone lives that long. And somebody chilling out in the youth stage for 5 years, okay, you'll find them complaining throughout their lives. Okay, because they won't be able to do much. सिर्फ कंप्लेंट कर पाते हैं. ठीक है, और कंप्लेंट करने से कुछ नहीं बदलता है, करने से बदलता है. तो करने की तरफ कोशिश करेंगे. मज़ा आएगा सुमन बेटा, जब आप मेंस लिख रहे होते हैं तो मज़ा आ रहा होता है. घर आके बस ऐसा अंगूठों में गड्ढे पड़ जाते हैं बहुत बार. ठीक है, वो लगातार दबा हुआ रहता है. सो एवरीबडी एक्सपीरियंसेस दिस एंड आई होप यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑल ऑफ यू. ठीक है, जितनी जल्दी मेंस लिखें, जितनी जल्दी इंटरव्यू दें, जितनी जल्दी सेलेक्ट हों उतना अच्छा है. ठीक है, तो गिव योर बेस्ट. और 5 years का मतलब सेलेक्ट होने के बाद भी जम के मेहनत करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. ठीक है, किसी का 1 साल की मेहनत में यहाँ हो गया तो 4 साल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है. So wherever you go, give your best 5 years and you'll see that you'll always be admired, always be respected for the hard work that you have put into yourself, not on others. आपने जो मेहनत सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए की है वो आपको रेस्पेक्ट दिलाएगी. हाँ भव्य बेटा, ऐसा ही होता है, सोचते नहीं हैं हम. ठीक है, 6 दिन बाद सोच पाते हैं. सो एवरीवन विल. हाँ सुमन भरिए, पीसीएस का भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है. सेम सिलेबस है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बट वहाँ लैंग्वेज का पेपर देना होगा, उड़ीसा, सब सिमिलर हैं. ओके, सो विल मीट अगेन टुमारो. टेक सम रेस्ट and try to flip through the pages, try to recall what we have discussed, and if any kind of confusion remains, definitely you will have an opportunity to ask those questions in the morning. So we'll again meet at 9 tomorrow morning. भाव्या बेटा, दूर क्या है, लोग अभी आप आईएएस बन के फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं, युगांडा भेज देगा. दूर है नहीं जाऊंगी ऐसा बोलेंगे क्या? ठीक है, अभी आईएएस बनेंगी, नागालैंड भेज देगा, नहीं जाऊंगी घर से दूर है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ओके, सो व्हेन you want to do this government job, they can send you anywhere. Okay, so go and appear for the exams. Okay, you gotta give the exams. घर में से किसी को पकड़ेंगे, भैया को, पापा को, छोटे भाई को, ऐसा चलो जाएंगे, घूम के आएंगे. Okay, so everyone, we'll meet again tomorrow. Stay healthy, stay blessed. Thank you.
Thank you very much.